सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ वी कैन हैंडल एन इम्बैलेंस डेटा, जहाँ पे आपके कॉलम्स के कुछ कैटेगरीज की वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है एंड कुछ कैटेगरीज का वैल्यूज़ बहुत कम है। सो विल बी क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट जहाँ पे वी विल बी फाइंडिंग एक रेस्टोरेंट्स के कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन रेट, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ टू डू सम हाइपरपैरामीटर ट्यूनिंग यूजिंग GridSearchCV। सो बहुत मज़ा आने वाला है। स्टिक टू द वीडियो so that you can learn some new things in machine learning. So let's get started. So as always मैंने dataset upload कर दिया है and the link to the dataset is in the description, so you can download it from there. So let's start importing the libraries. Import pandas as pd and dataset import करेंगे. So df is equal to v dot btsv, dataset का पाथ देंगे, copy paste and let's have a check to df. So as you can see हमारे पास कस्टमर्स का इन्फो है, जैसे एज, जेंडर, इनकम, कितने फ्रीक्वेंटली वो विजिट करते हैं पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, उनका एवरेज स्पेंड क्या है, उनका प्रीफर्ड क्यूजिन टाइप क्या है, टाइम ऑफ विजिट क्या है, कितने लोगों के साथ आते हैं वो, डाइनिंग ओकेजन क्या हो सकता है उनका, मील टाइप क्या है, उन्होंने ऑनलाइन रिजर्वेशन किया है या नहीं, डिलीवरी ऑर्डर है या नहीं, दिस इज काइंड ऑफ अ लॉयल्टी प्रोग्राम मेंबर, मे बी फ्रीक्वेंटली जो विजिट करता है दे कैन बी अ मेंबर ऑफ दिस, वो कितना टाइम वेट कर चुके हैं, सर्विस रेटिंग उन्होंने क्या दी है, व्हाट इज द फूड रेटिंग, व्हाट इज द एम्बियंस रेटिंग, एंड लास्ट में हमारा टारगेट कॉलम है, दैट इज द सेटिस्फैक्शन लेवल। तो यहाँ पे जो हमारा हाई सेटिस्फैक्शन कॉलम है इट इज इम्बैलेंस। यहाँ पे इफ यू कैन सी तो 0 के वैल्यूज बहुत ज़्यादा है एंड 1 के वैल्यूज बहुत कम है। So this is what we have to see how we can handle this kind of data sets. So the next thing that we'll be doing is to check the info as it is. You can see here 1500 rows and 19 columns. Still through code we can see df.shape. So we get 1500 rows and 19 columns. Next thing is to check for the duplicates. So df.duplicated dot sum. So कोई duplicates नहीं है यहाँ पे. Let's check the info as well. So df.info. So as you can see there is no null value because हर जगह 1500 is the value count. We don't need to have to remove or treat nulls here. So next thing is we will check the descriptive statistics. I will write df.describe. So ये हमें एक descriptive statistics का summary देगा basically, जहाँ पे you can see the count of rows, mean for each of the columns, standard deviation of the columns, minimum value, 25th percentile का value, 50th percentile का value, 75th percentile का value, and the maximum value. So if you don't know about this percentile thing, you can check the video on my channel about descriptive statistics and you will get a fair idea of all these things. So as we can see average age of the customer is 43, उनका एवरेज स्पेंड है 100 से 110 के आसपास। यूजुअली कस्टमर्स जो आ रहे हैं वो इन ग्रुप आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ 5 members. An average waiting time of this customer is around 30 minutes. You can see that. You can fetch a lot of statistics from this. The next thing is what we will do is, as you have seen कि ये जो
डिस्क्रिप्शन है, इट इज़ जस्ट ऑन द न्यूमेरिकल कॉलम्स. सो कैटेगरिकल कॉलम्स के लिए वी ट्राई टू फेच द वैल्यू काउंट. सो हम क्या करेंगे, हम ग्राफ्स प्लॉट करेंगे फॉर ईच ऑफ द कैटेगरिकल कॉलम्स. सो first I will fetch the categorical columns का name. So let's write cat calls and df dot select the types. Select the types will give you the particular data type के columns only. So we will write exclude is equal to number. तो exclude is equal to number करने से जितने भी इंटीजर या फ्लोट डेटा टाइप की जो वैल्यूज़ हैं वो सारे कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे एंड विल गेट ओनली दोज कॉलम्स जिनका डेटा टाइप इज ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये क्या करेगा, ये रिटर्न एक डेटा फ्रेम करेगा. हमें इसमें से सिर्फ कॉलम्स फेच करने हैं. सो आई विल राइट डॉट कॉलम्स. ठीक है, एंड ये जो कॉलम्स रिटर्न होता है दैट इज एन एरे. सो वी विल कन्वर्ट इट टू अ लिस्ट. सो कॉलम्स के बाद हम लिखेंगे टू लिस्ट. Now if I show you the cat calls, so it's a list of the column names जहाँ पे जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है. ठीक है, so we will plot some bar plots for all these columns. तो मैं एक लूप चलाऊंगा for I in cat calls. I have to plot some graphs. तो हम matplotlib और seaborn को import करेंगे. So I will write import matplotlib dot pyplot as plt and import seaborn as sns. So we have imported matplotlib and seaborn. Again, if you want to know the difference between these two, I have few videos on my channel जहाँ पे I have plotted some graphs using matplotlib and I also plotted some graphs with seaborn, then compared them both so you can see why seaborn is used much to plot some graphs. So let's continue the code. So for I in cat calls, I have to plot a bar plot. So I will write sns dot bar plot. यहाँ पे हम पास करेंगे x and y. So x would be df का I. ठीक है, because I is each of these column names in the cat calls का list. And then we set a title. So I will write plt dot title. Title होगा I. And as बहुत सारे plots बनेंगे तो हम यहाँ पे एक और लाइन ऐड करेंगे. That will be plt dot subplots. Okay, and let's run it. Yeah. Sorry for the mistake. We just have to pass it in the data का parameter. As you can see, the first parameter is data. So उस parameter में हमें इसे pass करना है. So I will just run it. Yeah. So as you can see, we have plotted all the graphs for each of the categorical columns. So as you can see, male and female में कुछ ज़्यादा difference नहीं है. It's quite balanced. Similarly, visit frequency में weekly, rarely, monthly and daily अगर कोई आ रहा है तो उसमें भी it's quite balanced data. Cuisine, preferred cuisine भी kind of balanced है. Time of visit is also balanced. Dining occasion भी balanced है. Meal type, takeaway and dining ये भी balanced है. So the only thing which is imbalanced here is the target column. So if I show you that, तो अगर मैं आपको इसके वैल्यू काउंट्स बताऊँ, so I select df का
high satisfaction, that is a target column, इसके value counts. So you can see हमारे पास 0 is nearly 1300 and 1 is only 200. So it is kind of a biased data set towards 0. तो हमें क्या करना है, we will be using one library called SMOTE which will do the upsampling of this data set. मतलब जहाँ पर ones के रोज कम है वहाँ पे वो रोज बढ़ा देगा. So it will basically do the duplicacy. तो let's see how we can use it. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, we will have to convert our categorical columns to numerical columns. So to do this you can also use one-hot encoder, but यहाँ पे I will use pandas का get dummies option. So we'll write pd dot get dummies. इसमें हमारा df पास करेंगे. then हम फर्स्ट एलिमेंट को ड्रॉप करेंगे. ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू एंड डी टाइप डिफाइन कर देंगे दैट वी वांट द डी टाइप एज इंटीजर. ठीक है. एंड व्हेन आई डू दिस एंड रन इट, सो इट विल रिटर्न यू अ डेटा फ्रेम जहाँ पे इफ यू कैन सी फॉर ईच कैटेगरी इसने एक कॉलम बना दिया है सेम एज one-hot encoder. ठीक है. So we'll save it in a new df. So I'll write new df is equal to this thing. And this is our new df. Okay. So now we will split this data set into x and y. So x will be df dot drop columns is equal to high satisfaction axis is equal to 1 and y will be df का high satisfaction. Okay. So next thing that we have to do is to apply the SMOTE. So पहले हम SMOTE को import करेंगे. So we'll write from imb learn. It's imb learn dot oversampling, क्योंकि हम इसको upsample कर रहे हैं, which means हम जहाँ पे target variable 1 है वो वाले डेटा बढ़ा रहे हैं. import SMOTE. ठीक है. अब SMOTE नेम से एक वेरिएबल बनाते हैं. SMOTE is equal to SMOTE. So the next thing that we need to do is to fit this SMOTE over our x वाला data set. So I will write SMOTE dot fit resample so that ये fit करके उसे transform भी कर देगा. We will pass x comma y because we need to give the target column as well. So अगर मैं इसको run करूँ, so we have an error, could not convert string to float. तो ये अभी भी string में है. So yeah, so the problem is हमने यहाँ पे इनकोड तो कर लिया और उसको हमने न्यू df में स्टोर किया है, बट जब हम x बना रहे हैं तो हमने उसको df में ड्रॉप किया है. सो यहाँ पे इट विल बी न्यू df, यहाँ पे भी इट विल बी न्यू df. ओके. सो इफ आई फिट इट अगेन, सो यू कैन सी कि हमें एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट ही मिला है बट इट इज़ नॉट स्ट्रक्चर्ड. सो इसे हम सेव करेंगे. सो ये हमें रिटर्न में दो वैल्यूज दे रहा है, एक x दे रहा है एंड एक y दे रहा है, एज यू कैन सी हियर. सो वी विल स्टोर इट इन अ वेरिएबल नेम्ड x resampled and y resampled. Okay.
So now if I show you x, so ये हमारा x resampled, and now you can see हमारे पास 2598 rows है जो previously हमारे पास 1500 rows थे. And now if I show you the value counts, तो y जो हमारा टारगेट कॉलम है उसका हम लोग वैल्यू काउंट्स निकालेंगे. तो y डॉट वैल्यू काउंट्स. So now you can see 0 भी 1300 है and 1 भी 1300 है. So now we have balanced the data. Next thing now that we have to do is to train test split. So we'll write from sklearn dot model selection import train test split and xtrain xtest ytrain ytest is equal to train test split. इसमें हम पास करेंगे xres and yres. टेस्ट साइज will be, as ज़्यादा डेटा नहीं तो 0.2. so yeah, this is our train test split. अब हम मॉडल बिल्ड करेंगे. so I will be using decision tree. So I will import from sklearn dot trees import decision tree classifier, obviously because ये एक classification task है. so it will be tree. so dt नाम से एक ऑब्जेक्ट बनेंगे decision tree classifier. so इसमें भी हम कुछ hyperparameters दे सकते हैं, but we will tune it while using GridSearchCV. Currently I am keeping it to defaults. so let's fit this. dt dot fit xtrain comma ytrain. and I will store it in a dt model. model और अब predictions निकालते हैं. so preds is equal to dt model dot predict xtest. so predictions निकल गए. let's evaluate the model. so I'll be using classification report. so from sklearn, why I am using this you will get to know. so from sklearn dot metrics import classification report. so cr is equal to classification report. we will pass our preds comma ytest. and अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे cr को, so you can see हमारे पास ये सारे मैट्रिक्स आ चुके हैं. प्रिसीजन, रिकॉल, f1 स्कोर, ठीक है, एक्यूरेसी भी है हमारे पास. so as you can see एक नियरली 83-85% का एक्यूरेसी स्कोर हमें मिल रहा है, f1 स्कोर हमें मिल रहा है, एंड 84% का एक्यूरेसी स्कोर हमें मिल रहा है. so without any hyperparameter tuning. so one more thing that you can do is यहाँ पर in decision tree you have an option named class weight, this thing, ठीक है. so if I say class weight is equal to, यहाँ पे you can pass balanced so that वो दोनों जो कैटेगरीज है उसको बैलेंसली ट्रीट करे. let's train the model and fetch the predictions again. so as you can see कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, but you get the idea. so
Now let's see how we can use GridSearchCV to play with the hyperparameters. So GridSearchCV import करेंगे पहले. So we'll write from sklearn dot model selection import GridSearchCV. Grid नाम से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा and we'll include our GridSearchCV there. तो GridSearchCV में हमें कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं. Like first thing is the estimator. The estimator is nothing but the model. Okay, so estimator will be our DT जो हमने ऊपर डिफाइन कर लिया है, which is nothing but decision tree. So यहाँ से मैं क्लास वेट निकाल रहा हूँ so that हम हाइपरपैरामीटर्स के अकॉर्डिंग देखें कि क्या बेटर आ रहा है. Okay, so estimator is DT. The next thing that you need to give is the param grid. The param grid is nothing but a dictionary जहाँ पे you map the values to the corresponding parameters. Okay, so what I will do is यहाँ पे हम decision tree का documentation open करेंगे. So we will go to decision tree classifier and यहाँ पे you can see we have a lot of parameters that we can play with. So सबसे पहले हम criterion लेंगे. So criterion and इसके values को हमें एक list में पास करना, like for what all values we need to test. So criterion में हमारे पास है Gini, entropy and log loss. So हम ये तीनों लेके यहाँ पे paste कर देंगे. Next hyperparameter that we want to see is splitter. So splitter क्या करेगा? Splitter will try to split the decision trees in two ways. It will be random or best split. So default में best ही होता है. So I will pass best comma random. You never know कि किस splitter type से you are getting a better result. So you can try them both. Next thing that we will try is the max depth कि हमें tree को कितना grow करवाना है. So I will pass the values up to 5, 7, 10, 15. Okay, so currently कुछ ही values के साथ हम try करते हैं. The next thing that we will pass, so एक और hyperparameter हम try करेंगे, that is max features. So max features क्या करेगा? It will take the number of features, कितने maximum columns आपको include करने हैं आपके data में से. So यहाँ पे we can give a number of 2.5, like 25%, 50%, 75%, या सारे के सारे columns like 100%. So after doing this we have few parameters as well. Grid में जैसे scoring हमें देना है, तो scoring would be our metric. So that is nothing but we'll try with F1 score. And यहाँ पर आप, so if I show you, यहाँ पर आप CV, that means cross validation का भी एक number define कर सकते हो, that how many times आपको इसको cross validate करना है. So currently I'm not doing it because it would take a lot of time to run it. So but you should do that. You should try with like 5 cross validations or 3 cross validations to get a robust model. So I will run this.
एंड अब हम ग्रिड को फिट करेंगे. सो आई विल राइट ग्रिड डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, एंड इसको हम सर्च नेम्ड वेरिएबल में स्टोर कर देंगे. सो लेट्स रन इट. नाउ इट माइट टेक क्वाइट टाइम बिकॉज हम बहुत सारे पैरामीटर्स के कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर रहे हैं टू गेट द बेस्ट F1 स्कोर. एंड या सो इट्स डन. सो करंटली हमने बहुत कम पैरामीटर्स के साथ ट्राई किया है, सो ये जल्दी ट्रेन हो चुका है. इफ़ यू ट्राई विद अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स एंड विद अ लॉट ऑफ वैल्यू, सो इट विल टेक टाइम. प्लस हमने क्रॉस वैलिडेशन भी अप्लाई नहीं किया. सो yeah, so after you get the grid, you can search for the best parameters. So हम search लिखेंगे and we have a attribute named best params. Best params क्या देगा? हमें वो सारे parameters की best value देगी जिनसे हमें best F1 score मिला है. So let's fetch this. So it says कि criterion हमें entropy रखना है. मैक्स डेट हमारा 15 होना चाहिए. मैक्सिमम फीचर्स हम 0.75% ही ले रहे हैं. स्प्लिटर विल बी बेस्ट. सो ये सारे हाइपर पैरामीटर्स की वैल्यू रखने के बाद व्हाट वी गॉट द स्कोर इज. सो वी हैव अनदर एट्रीब्यूट नेम बेस्ट स्कोर्स. इट्स बेस्ट स्कोर अंडरस्कोर. So the best score yet is 84% का F1 score. So if you try with few more hyperparameter tuning, you will definitely get a better score. So that can be a good exercise for you to do it. And that was all for the video, and thanks for watching. I hope you liked it and you learned something new from this video. So if you haven't yet subscribed to the channel, please subscribe, please hit the like button, and I will see you in the next video. Take care.